से इसका लेना देना ही नहीं है ना। ये लोग तो पूछ ले, वो कल उसका मेन वायर जल गया तो वो उसको ओके करके वो कर रहे हैं, तो उसको 5-10 मिनट लगेगा। लाइव चालू है, लाइव चालू है, यूट्यूब लाइव पे सब कुछ जाएगा। हेलो टॉस अभी कर लो, जब तक ये चालू नहीं, तो ये चालू में टॉस करोगे ना तो सारा इसका साउंड यूट्यूब पे जाएगा। Hi, good evening, ladies and gentlemen. Can we request both the captains to come for the toss? नहीं देगा ना बिना पास के एंट्री नहीं देगा। मैच चालू है, मैच के लिए उधर से आओ, उधर से एंट्री दे रहा है मैच के लिए। तुमची गोष्ट वेगळी आहे, मला नाही मारे रिसर्च कोरायला नाही, पुराने वाले वॉचमैन है ना, वो लोग जान वॉचमैन नहीं है हमारे को, वो देखो आ गए ना, अभी के ना 1 मिनट और वो तो बाकी सब बोलेंगे ना मेरे पास गाड़ी अभी जब चलेंगे तब पता चलेगा। क्या मैंने कहा आपने हर्ड ऑफ दिस आर्टिस्ट? हाँ तो मैंने ऐसा गूगल करा था, मेरा वाज डूइंग हर महाराज का गाना है, नहीं मुरारी बाबू निगम का जो गाना है ना, से थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा ना। हाँ मैंने बोला उनको, मेरे को कोई इशू नहीं है, एकदम उधर बिजी है, अगर के सब बैटिंग आई गया तो फिर तो चालू कर ही देंगे, बॉलिंग आगे तो मैं Akash. Yes, it's toss time as far as match number 10 is concerned. Welcome to the Anandrathi Gsc T20 League 2025. To my right, it is team Rising Titans. They played one match. They've won that match. So playing their second match. On the other hand, team Superkings are going to be playing their third match. 1 win, 1 loss. So quite an important game for both the teams. Requesting Aditya Gupta to please come for the toss ceremony. I have with me Vinay Surana, Shailesh Chadwa, Captain Abhay and Amarkan Jain. The 4 pillars of strength to Kaushik Bhai Mehta. So yes, should be quite an important game, cracking game. The 2 captains, captain and co-owner Mr. Sunil Raj, and to my left Sanjit Srivastav, the captain for team Superkings. Toss time. It's going to be Vinay Surana, the convener of the event, to flip the coin. Heads is a call from team Rising Titans. It's heads. Quite an important game, Sunil. You won the first match. You all played very well. Quite a tight game which went in your favor. So the confidence will be high as far as your camp is concerned. No doubt. It was a hello. Good evening, guys. It was a humdinger of a game, no doubt about it. And this time also we are planning to bowl first because they are a superstar side. They have a good batting depth. We'll try to restrict them to as low as possible. That's what our target is right now. And kids are like, boys are like, it's been a long delay. We should say that you missed a match because of the washout. So it was like 2 weeks a gap. But still, we are in good touch with the cricket. Let's see what we do tonight. The 2-week gap could be a blessing in disguise.
on some occasions it could work against you. So let's see. They've decided to bowl. Yes, so you're going to be batting first. You are on a confident high after that terrific victory. The first game you all lost, but you all... You're going to be batting first. So what's the score that you want to be reflecting on the board at the end of the first 20 overs? Hello. So, I mean, the toss is not in our hands. And to be honest, I was looking to bat first as well. We have been doing well batting first. And I don't care about the pitch conditions, whatever we get in the first inning or second innings. Like, I have full faith in my team. Whatever score we do, and we will defend it. All the best to Team Titans. I like the way he said... I am not bothered about the pitch. It wasn't to be. It was I. But yes, that's the way the captain got to lead from the front. It's time for both the teams to come together for the team snap and then the national anthem. Half the team will kneel down. The team is after Sanjita. One with the thumbs up. बोलो गणपति बाप्पा. Attention में खड़े होंगे नेशनल एंथम के लिए. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. The first delivery will be bowled at 7 p.m. on the dot. Thank you. Wishing both the teams the very best. May the best team win at the end of the day. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
ready? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Ready?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? स्वागत है कुलदीप सर का. It's all set for game number 10 to get underway. One of the players of team Superkings is playing the final of the snooker tournament at GSC. That's Pritpal Singh Varaj. Playtime. It's going to be Ayush Agarwal to be bowling to Gaurav Devli, the man of the non-striking, and that's Mickey Modi. Oh, a little tentative, a little circumspect. Got the batsman on the wrong foot, and they go for that risky second run. In the end, make it quite comfortably. A tentative push from Gaurav Devli. Fortunately for him, the ball landing behind the fielder. A couple of streaky runs added. Ayush Agarwal to Gaurav Devli. Two young guns up against each other. Looking to hit the deck hard. Quite a tall man. This young lanky bowler Ayush Agarwal. In that channel outside the off stump, going away from the batsman. The first extra run of the evening. Having won the toss, team Rising Titans have chosen to bowl first, inviting the opening duo of team Super Kings to take first charge. The second wide delivery on the trot.
That should be a hat trick of wide balls. Just to wonder why that line after those couple of very good probing deliveries first up. Just to wonder why he's looking to keep the ball away from the range of the batsman. It's got to make the batsman play at all times. You got to make this new ball talk. Nicely leaning into that one. He slashes hard, goes over the top. One bounce crashing into the Cryptomania boundary fence. Room on offer, and he gets the treatment that he deserved. This is absolutely shocking, the line that is bowling after the first couple of very good deliveries into the stumps. The off cutter, once again nicely driven into that extra coverage, and man stationed at the edge of the circle. That's Sashwat Junjunwala. What a shot! That's a cracker of a shot. Just look at that exemplary weight transfer. Is going after Ayush Agarwal. End of quite an expensive over with that Cryptomania boundary. The score moves on to 13 runs in the first over. Not the ideal start for Team Rising Titans after having chosen to bowl first, winning the toss. A couple of very good deliveries first up, then all of a sudden the change in line, and Gaurav Devli taking utmost advantage of the room that he got right through the over. At the end of the first Spectra Group Barrage machinery over, that's 13 for none. It's going to be Boni Mariwala to be sharing the new ball with Ayush Agarwal. The job is cut off for Boni. He's coming back after missing one season and will be raring to go. Quite a seasoned campaigner. He's got so much of experience with him. He's got to put the ball in the right areas. Starting the proceedings from the in-orbit end. The man on strike, that's the co-owner of the team, Mickey Modi. The first two matches for Mickey Modi, the batsmen, have been more than decent. And if we can continue with the same kind of form, it's going to be a blessing in disguise for Team Superkings.
Getting some inward movement. Hello. ये साउंड चालू करो 2 मिनट ये साउंड चालू करो Hello, hello, check. Hello, check. Hello, check. साउंड बढ़ाओ उधर इवेंट चालू है क्या इसके लिए We are into O number 2. That's 16 for none. That's a deliberate outside the off-stump line from Bonnie, looking to get the ball to nip inside. Early days in this game number 10. Team Superkings versus Team Rising Titans. Team Rising Titans have played just one match and they have won the first league match into the second one. As far as Superkings is concerned, 1 win and 1 loss. In reasonable control of that aerial shot. What a shot! Straight to the man in that sweeper point area, but just look at that shot for pure timing. End of the second Spectra group. Barrage machinery over. The scoreline reads 19 for the loss of no wickets. Welcome to the Anandrathi Gsc T20 League 2025. Relief partner Zandu Fast Relief. Thank you to Ravindra Matharu for sponsoring the tea and coffee. The gifting partners me and Specs. Hashtag Nuts. The co-sponsors Cryptomania web series. Chetak Ply, Maharaja of Ki Pasand. Sejal Realty. Barrage Rubber Processing Machinery, Spectra Group, Ketal Sania Construction. Ayush to Mickey Modi. A half century to the blade of Gaurav Devli in the earlier match. So we'll be looking to consolidate his performance here one more time tonight. Early days in the match, but it's a good start for him. Just poking at that one. Flirting with danger when you look to play that kind of a shot. Almost a nothing shot.
That's a probing line and length from Ayush. In the block hole, the batters cross over for a single to take the scoreline to 21 for none. Quite an expensive first over from Ayush Agarwal. Will be looking for some redemption. What a cracking shot from Mickey Modi. That's a smashing Cryptomania boundary. Not the one to take things lying down. That's the kind of player that Mickey Modi is. He wants to take charge. He wants to be in command of himself. He looks to dominate the bowling attack. That's a smashing shot on the rise. Wasn't a bad delivery, mind you. Starting to look good, both the batters. 25 for none. A good testing delivery. Showing some good character, Ayush Agarwal. For some reason, the first over was pretty ordinary from Ayush Agarwal, who's been in decent form. No pressure at the start of the match. Nipping back into Mickey Modi. End of the third Spectra group. Mirage Machinery over. 25 for none. A business-like start for Team Superkings after being invited to bat first. Early days in the match. Mickey Modi, Gaurav Devli, Pavan Panara, Bhavnid, Sanjit Srivastava, Deepan Patel, Dhananjay Vengurlekar, Pritpal Baraj, Aryan Devra, Sachet Agarwal, Shubhankar Joshi, Vansh Agarwal, Abhay Maru, Dhairya Fofadia, Ashish Siroya, Kamlesh Chadwa, Soham Singh and Siddharth Shah. The squad of 18 players for Super Kings. Into the attack, that's Prakash Linga, bowling from the in-orbitant. Quite a pro. So definitely is one of the key players in the lineup of Team Rising Titans. His stocks have been on the rise through the last 3 seasons. One of the key all-rounders. A very handy player both with the bat and the ball. Into the pads. What a shot. Was it? Down the leg side. Welcome to Mr. Ram. Well fielded by Nikhil Kohli. That's a good piece of fielding there. That kind of an effort will encourage Team Rising Titans as a fielding unit.
nicely mixing his line and length in this very first over. As I mentioned earlier, that is quite a pro. Is a part of so many cricket events in and around Mumbai. Playing at least 8 to 9 months in a year. What a shot there. Just look at that. Very smart pickup shot. Chetak Ply sixer. Maharaja of ki pasand. Hitting the deck hard, but just rising on his toes and putting the ball over the man stationed in that backward of square leg area for a smashing six. The first six of the evening. No room for error. Well bowled, well played. This is such good cricket from Gaurav Devli. Oh, welcome overthrow. Cryptomania boundary. So 5 runs added there. Runs coming in thick and fast. 38 for none. Off to a very good start here. That's team Super Kings. Early days in the match, but team Rising Titans will have to exhibit more energy in the field. Got to pull up their socks here, team Rising Titans. Quite an important game. Team Super Kings is a very dangerous outfit. You do not want them to get a flying start here. A better line and length from Prakash Linga. A little expensive start to his spell. Score at the end of 4 Spectra group. Barrage Machinery overs. That is 38 for 1. Kuvar Mahajan being brought into the attack from the Infinity and the man on strike. That's Gaurav Devli. 38 for none after 4. The man in blue, team Rising Titans, winning the toss and without any hesitation opting to bowl first. The man in grey, Super Kings. Such a good run. That is straight to Prakash Linga. That was hit with good timing. A very well judged single to take the score to 40. The first over for Kuvar Mahajan. The 5th one for the team.
What a shot that is! Just look at the handsome Chetak play. 6 महाराजा की पसंद वाला ये शॉट, बेहतरीन शॉट, क्या कनेक्शन प्राप्त किया, बहुत ही सटीक टाइमिंग, बढ़िया पिकअप शॉट, बिल्कुल अपनी रंगत में आ चुकी है, उजागर होकर विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को सजाते हुए गौरव देवली। विद द मूवमेंट खेला, गेंद अंदर की तरफ, पैड्स की तरफ ड्रिफ्ट हो रही थी, मूवमेंट के साथ पिकअप शॉट के माध्यम से गेंद को मैदान के बाहर उठा पटका। छियालीस रन से बन चुके हैं बिना कोई नुकसान के। अच्छी फॉलोअप डिलीवरी, क्रैम्प किया बल्लेबाज को, आखिरी वक्त पर बल्ले के फेस को खोलते हुए खेल दिया बैकवर्ड ऑफ पॉइंट में, 1 रन की बढ़त, 47 रन से बिना कोई नुकसान के। पांचवी ओवर की एक गेंद शेष है, 47 रन से बिना कोई नुकसान के। एक अच्छी सलामी जोड़ी साबित होती हुई टीम सुपर किंग्स के लिए। बढ़िया विकेट कीपिंग की, हमेशा की तरह विपुल गाला थोड़ा सा दिशा से भटके, कुंवर महाजन थोड़े से प्रेशर में, क्योंकि दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए, आक्रामक रवैया इख्तियार किए हुए मिकी मोदी और गौरव देवली। हमारे 3 गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स यहां पर उपस्थित है, सम्माननीय बाबू भाई, सतीश अग्रवाल सर और जितेंद्र गुप्ता सर, हमारे 3 गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स। गति में परिवर्तन किया, अच्छी टाइमिंग न होने के बावजूद वो गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई थोड़ा सा मिस कर गए निखिल कोहली, फलस्वरूप और एक क्रिप्टोमेनिया चौका। 50 रन से मुकम्मल हो चुके टीम सुपर किंग्स के लिए, 50 अप ऑन द बोर्ड इन क्विक टाइम। Welcome to Mr. Sanjeev Mahajan, Mr. Ram. सत्ताईस मिनट्स लिए हैं 5 ओवर्स को मुकम्मल करने में, थोड़ा सा नजर रखनी होगी हमेशा क्लॉक पर। टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम योर टीम राइजिंग टाइटंस। स्वागत है सारांश का। एक बहुत ही दबंग ओनर है जयदेव गुप्ता जी। सुनील रहेजा, द कैप्टन एंड को ओनर ऑफ टीम राइजिंग टाइटंस।
Drifting into the pads, Sunil Raja is giving it a spirited chase. The ball has enough wills on it to go over the boundary rope. Cryptomania boundary. Runs coming in thick and fast at a very fair clip. Team Rising Titans will have to be a lot careful here. पहले विकेट की खोज में लगी हुई है टीम राइजिंग टाइटंस. अभी तक मैच के टॉस को जीतकर गेंदबाजी का चयन जब से किया है. अभी तक सफलता उनके हाथ नहीं लगी है. मिस कर गए. क्लीन बोल्ड हुए गौरव देवली की वो आत्मविश्वास भरी पारी वहीं पर समाप्त होती है. Flattering to deceive once again after that good start. Should have continued for some more time. Coming back to the pavilion after a very well made 34 runs, but he will be dejected, disappointed. That 30 plus should have been converted into 70 plus. That's the kind of start that Gaurav had. He was looking in good nick, good touch. A good knock comes to an abrupt end. The first K. Talsania construction wicket of the evening. Siddhant Singh providing that breakthrough. A master stroke from Sunil Raja to get him into the attack. स्वागत है विधायक श्रीमान असलम भाई का. That's an audacious shot to be playing to the first delivery that you face. That's a shocker, that kind of a shot. स्वागत है सम्माननीय विधायक असलम भाई का, रमन भाई खत्री,
Not out. It had also pitched outside the leg stump. Welcome to Mr. Raman Khatri. I didn't recognize you. I swear I didn't recognize you. क्या किया क्या ऐसा कुछ? आज कैंप में मैं नहीं हूँ. पूरा different personality पूरी. Oh, what a shot there. Enough gas on it to take the ball just a little over the head of the man in that long on position for a flat Chetak Ply sixer. End of the Spectra group. Barrage Machinery power play 61 for 1 off to a flamboyant start, that is team Super Kings. एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत प्राप्त होती हुई टीम सुपर किंग्स को आमंत्रित किए गए थे बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान संजीत ने टॉस के वक्त ये फरमाया कि अगर वे टॉस जीते तो बल्लेबाजी करते ही, तो इस लिहाज से ये टॉस किस टीम ने जीता है वो मायने नहीं रखता है। जो टीम अपना सर्वोत्तम क्रिकेट प्रस्तुत करेगी उस टीम के पास बेहतर मौका होगा इस मैच को अपने नाम करने का। Mickey Modi playing like Mickey Modi. Gaurav Devli a little disappointed with that kind of a dismissal. He was looking so good. That 30 plus should have been at least 70 plus, 80 plus. More than 3 centuries in this tournament. Yesterday also we saw 90 plus from the blade of Nishil Mittal. Quite a few half centuries. 65 from Aslam Bhai. So if you get your eye in, it's going to be difficult to dislodge you. Unless you play a false shot, unless you gift away your wicket, it's going to be difficult for a premier batter to get out. So Gaurav Devli, after that kind of a start, should have carried on for some more time. Raghav Ramchandran has been introduced into the attack. One more promising young player at the GSC. फिर से एक बार हमारे तीनों ही जीसी मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं। सम्माननीय बाबू भाई, सुरेंद्र, जितेंद्र गुप्ता जी और सतीश अग्रवाल जी। मेरे ख्याल में डीजे को इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए प्रमोट किया गया है। लाइसेंस लेकर आए कप्तान के पास से कि अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। पिंच हिटिंग करने के लिए नंबर 3 के स्थान पर भेजा गया है धनंजय को। बड़ा मौका है धनंजय के पास नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना। अच्छी गेंद
थोड़ा सा आमंत्रित किया था मिकी को कि बड़ा शॉट खेले, नियंत्रण में थे मिकी मोदी। चलिए, क्रिप्टोमेनिया चौका प्राप्त होता हुआ। कभी कभी शेन वॉर्न भी अपने स्पेल में कभी कभार इस तरह की गेंद को पेश करते थे। सीम अप डिलीवरी थी, बैक ऑफ लेंथ, बारी किनारे लेकर गेंद क्रिप्टोमेनिया बाउंड्री के उस पार। That should have been put away. Missing out on that opportunity, Mickey Modi. That's going to be a wide one, so doesn't matter. But if he had to get even some bat on it, it would have been a sure shot to Cryptomania boundary. Oh, that is into the comb box and over the rope. That was well taken, but it's going to be a Chetak Ply sixer. A little off balance. Never mind, Gover margin. That's a good effort. Just look at the replay there. There you go. Just he should have thrown the ball out of his hands. One would have expected that kind of a presence of mind from somebody as young as Kumar Mahajan. A good effort. 8.5 out of 10 for that effort. 8.5. If he had to put the ball back in play, would have been a 9.5. Almost took that catch. Terrific effort. There you go. Just look at the anguish in his face as he knows that he faltered by not putting the ball back in play. चलिए अब गेंदबाजी में आजमाइश होती हुई और एक नुमाइंदे की, और ये नुमाइंदा कोई आम नुमाइंदा नहीं है। क्रिकेट की पाठशाला दीपन पटेल का अब आगमन होता हुआ बॉलिंग क्रीज पर। सामना करेंगे मिकी मोदी। इसके पहले के दोनों ही मैचेस में पहले ओवर राजीव गर्ग, माफ कीजिए, वेकअप कॉल फॉर सुपर किंग्स। राजीव गर्ग एक मंजे हुए खिलाड़ी है, काफी सूझबूझ से पहले के मैच में गेंदबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया स्पेल को अंजाम दिया था। अच्छा कैच, हवा यात्रा पर गेंद निकली, पहले ही गेंद पर सफलता हाथ लगती हुई राजीव गर्ग की वो बड़ा विकेट है। सेट बल्लेबाज पेविलियन में वापस जा चुके मिकी मोदी। केतल सान्या कंस्ट्रक्शन, उनके स्थान पर अब आते हुए कप्तान संजीत श्रीवास्तव।
इस बीच स्वागत है वीर सरवैया, नरेंद्र जडेजा, मयूरा अमरकांत. वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. Warm welcome to our governing council member and cricket committee chairman, the man behind the show, that's Mr. Kaushik Mehta. और एक हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर सम्माननीय सुनील काबरा जी का स्वागत है. वेलकम सर, मिस्टर सुनील काबरा. Driving it downtown, off the mark Sanjit with that single. दौड़ लगाते हुए निखिल कोहली स्पिरिटेड चेस किया है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. नजाकत से मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में. प्रकाश लिंगा वहां पर मौजूद. क्या बात है. बढ़िया शॉट. फिर से एक बार डीप कवर्स में तैनात फील्डर के हाथ में वो गेंद. हमारे काफी गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स यहां पर मौजूद है. सम्माननीय सुनील काबरा जी, सम्माननीय बाबूजी सतीश अग्रवाल सर, जितेंद्र गुप्ता जी, हमारे क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौशिक भाई मेहता. हेलो सर. काफी लोग बिल्कुल वो कव्वाली महफिल के ड्रेस में आए हुए हैं. वी सरवैया, कौशिक भाई, वहां पर कव्वाली की महफिल सजी है और यहां पर समा बांधते हुए हमारे सभी शानदार क्रिकेटर्स. 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद रन संख्या 84 रन से 2 विकेट के नुकसान पर. हमारे टाइटल स्पॉन्सर आनंद राठी, ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस. सिद्धांत सिंह ने अपने पहले ओवर में 9 रन देकर एक बल्लेबाज को पेविलियन चलता किया था. एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज, हुनर का पौधा है सिद्धांत. धनंजय वेंगुर्लेकर के पास ये बड़ा मौका है. चुनौती को परिवर्तित किया है मौके में.
9 गेंदों में 16 रन्स बना लिए धनंजय ने। क्रिप्टोमेनिया चौका। रन संख्या अब 88 रनों पर। नोवा स्पेक्ट्रा ग्रुप, बराज मशीनरी ओवर। जिस काम को अंजाम देने के लिए डीजे को प्रमोट किया था नंबर 3 पर, उसी काम को सटीक तरीके से अंजाम देते हुए गेम प्लान के अनुसार अपनी इनिंग्स को सजाते हुए, और संजीव श्रीवास्तव अपनी टीम का एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, कप्तान भी है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए हुए, उसी अच्छे फॉर्म को बरकरार रखना होगा। Sanjit looking to break into that league of the top 12 place at the GSC. He's almost there. What a shot. Just look at the rhythm in that shot. Almost like poetry. What a big canvas to be feeling with his strokes. Sanjit Srivastava just leaning into that shot. A very still head. Cryptomania boundary to take the score to 93. That's quite a delectable shot. Well bowled. Well played as well. That's a very well judged run. Playing with soft hands. Playing it close to the body, under the nose with soft hands. The stocks rising for Sanjay Srivastav. In his breezy innings so far, DJ has not been able to 100% time the shots. But he's going very well at the moment. He's collecting some momentum. Just what the doctor ordered for DJ. He was a goner. He had almost lost hope. The throw was at the perfect end because DJ had played the shot on the back foot. He didn't want that run. He was forced by the captain to take that run. अगर कप्तान के जगह पे और कोई होता तो डीजे ना कह देता। कप्तान को ना कहने का सवाल नहीं है। बाल बाल बच्चे उस थ्रो को कलेक्ट करते तो ये तीसरा के तलसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट होता। 9 स्पेक्ट्रा ग्रुप और बराज मशीनरी ओवर्स के पश्चात 97 रन से 2 विकेट के नुकसान पर ड्रिंक्स इंटरवल के पहले की आखिरी ओवर। हमारे स्कोरिंग पैनल के इंचार्ज पूरे साल के लिए, पूरे सीजन के लिए, जॉन्टी सिंह। प्रोमो प्रोडक्शंस इन चार्ज ऑफ गेटिंग यू द लाइव पिक्चर्स। वो उंगली उठी है, वो गेंद नीचे डीप कर रही थी। राजीव गर्ग के उस दूसरे ओवर में फिर से एक बार सफलता। पहले ओवर की पहली गेंद पर केतल सैन्य कंस्ट्रक्शन विकेट। राजीव गर्ग के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर और एक केतल सैन्य कंस्ट्रक्शन विकेट। पहले मैच में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। ड्रिंक्स टाइम हो चुका है। मिलते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के पश्चात। 55 मिनटों में 9.1 ओवर्स किए हैं।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Welcome back. Rajiv Garg off to such a good start, continuing from where he left in the last match. Man with the golden arm. No need to run for that one. Just what he doctor ordered. Not such an ideal starter to the proceedings in the post-rings interval session. 97 for 3 it is. 100 runs up on the board. 101. Oh, a bit of a mix-up. What's going to happen here? That's an absolute tragedy. Absolute tragedy. Abhay Maru, one of the backbones of the Super Kings team, as the perfect middle order batsman, is on his way back to the pavilion. Dejected, disgusted.
In comes Bhavneet Birdi. One more very positive player. Off the mark, that's Bhavneet. Cryptomania boundary. Very well played by Sanjay Srivastav. Good looking stroke. He will be looking to make amends as he was a part of that mess as far as Abhay Maru was concerned. So he's got to just delete it from his memory and just get going with the job on his hands. Score after 10 Spectra Group. Barrage Machinery overs, that's 107 for 4. The run rate is absolutely handsome. But the 4 wickets that they have lost, the 4 top order batters who are back in the pavilion will be a bit of a concern for Team Super Kings. And that is why I will say that the match is just a little bit in favor of Team Super Kings. Courtesy those 4 wickets. Team Rising Titans are back in the match. Siddhan. Very well bowled. Warmest welcome to Mr. Vicky Bhai Mehta. स्वागत है. Oh, super timing. A man in place. स्वागत है मयूरा अमरकांत का. Driven downtown.
Ayush Agarwal in that longer position is already taken one good catch. Cover margin, an absolute live wire. Third attempt and he misses it. That should have been a Ketal Sandhya concession wicket. Sunil Roija misses on that catch. Bhavneet Birdi has been provided a life. Score after 11 Spectra Group, Barrage Machinery overs. The Nelson mark, 111 for 4. राजीव गर्ग का वो बहुत ही अच्छा स्पेल बरकरार रहेगा. अपने 2 ओवर्स में 2 बल्लेबाजों को पेविलियन चलता किया, 16 रन्स दिए हैं. अपने अच्छे बॉलिंग फॉर्म को स्थापित रखे हुए हैं इस मैच में भी राजीव गर्ग. स्ट्राइक पर संजय श्रीवास्तव जिन्होंने 8 गेंदों में 14 रन्स बनाए हैं. चार रन्स मिलेंगे संजय श्रीवास्तव को. क्रिप्टोमेनिया चौका. हो भी गए और लंबे किक गए आर पार. 6 तक प्लाई 6. संजीत श्रीवास्तव के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का.
123 रन। बारह ओवर्स के बाद 124 रन से 4 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं। उसका फुल लेंथ डिलीवरी को जवाबी कार्रवाई के रूप में भवनीत ने एक आक्रामक शॉट लगाते हुए 6 रन बटोर लिए। 6 तक पलाई छक्का महाराजा की पसंद। रन संख्या 130 पर एक बड़े लक्ष्य की तरफ ठोस कदम उठाती हुई टीम सुपर किंग्स। अच्छी टाइमिंग अब अपने आपे में आते हुए भवनीत बहुत ही पॉजिटिव प्लेयर है। इस वक्त प्रोजेक्टेड स्कोर 212 का है। अभी तक केवल एकमात्र ऐसी टीम है जिन्होंने 200 के पार लक्ष्य खड़ा किया है। बिल्कुल 212 रन बनाए थे। करंट रन रेट 10.56। थोड़ी सी मिसफील्डिंग। अच्छा बैकअप वहां पर प्रकाश लिंगा का। शानदार शॉट, बिल्कुल जड़ में की गेंद को थोड़ा सा शफल किया, जगह बनाई, करारा 6 तक पलाई छक्का, तेज तर्रा शॉट। क्या विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को सजा रहे संजीत। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में मैच नंबर 1 से। Score at the end of 13 Spectra Group Barrage Machinery overs, that is 139 for 4.
रुक किया थर्ड अंपायर की दिशा में. That's a strong appeal. That important Ketal Sanya concession wicket of Bhavnit. It's been referred again.
Congratulations to Pritpal Singh Baraj. A little hard luck as well, as he ended up runners-up in the snooker tournament. But what a journey he had. One of the topmost snooker players at the GSC, that's Pritpal Singh Baraj. That is the umpire's call. Score after 14 Spectra Group. Baraj Rubber Processing Machinery overs. 142 for the loss of 5K Talsania concession wickets. Half the team back in the pavilion. Let's have a look at the batters standings. Daksh Agarwal at the top, 170 runs of 3 innings. King Shukurai, number 2, 155. Vikram Panjwani, 121 of 2. Aslam Bhai, number 3, 114. And Aniket Kawade, 111. And the bowlers, Yash Tulshan at the top, Rajiv Garg, number 2, number 3 Praveen Jain, number 4 Hetul Kothari, and number 5 Anil Duggar. Ayush back into the attack. Sanjit on to 33 of 17 balls. Pawan Panara relatively new at the wicket. This is exactly the kind of opportunity that Pawan Panara was wanting. He's got enough time on his hands now to play his own game. Pawan Panara, the Bahubali. What a good delivery. बाईस मिनटों में 6 ओवर्स को अंजाम देना है.
Kleptomania Chaka. Carrara shot. That was in the slot. In that kind of form, is not going to be missing out on those opportunities. Smashing boundary. Sanjit Srivastav in the pink of form. What a way he's leading the troop. Oh, goodness me. That's an unbelievable shot. The bottom hand coming into play. The last moment adjustment. That was such a good delivery. Exceptional batting from Sanjit Srivastav. 150 runs up on the board for Team Super Kings. The ball keeping a little low, nicely fended away by Sanjit. Well played. End of 15 Spectra group. Barrage machinery overs 151 for 5. Just look at that awesome run rate. More than 10 plus. 10 plus. Raghav into his second over. The first one was quite an expensive one from him. Bowling to the man in good form. Well timed and into the gap. Well fielded, saving 2 runs there. 153.
guys were playing. So I was there cheering them up and I heard your sounds. I was like, it must be you only. बोलो ना. मैं कब आपके पास आके देखा है ना. 154. One 55. Very well bowled. That almost squared Pawan Panara. Score after 16 overs, 156. Big thank you to the title sponsor, Anandrathi, over 30 years of excellence. The co-sponsors, Cryptomania web series, Spectra Group, Barrage Processing, Rubber Processing Machinery, gifting partner, Me and Specs, hashtag Nuts, Zandu Fast Relief, Cryptomania the web series, Chetak Ply, Kit Alsania Construction, Rising Boundless, the title sponsor Anandrathi, over 30 years of excellence. Tushar Prakash Linga back. Thirteen minutes and 4 overs to be bowled. Good hands. 157. That has been referred upstairs. It's been given a wide in the meantime. That will be interesting.
The writing on the wall, that's out. Did not get his back foot back in time, and that's a costly miss by Pawan Panara, not able to make the most out of that opportunity. .158 for 6, the 6th Ketal Sanya construction wicket. The new man in the area for Fadia. Oh, that's going to be a Cryptomania boundary fence. No margin for error, room on offer, and therefore Fadia picks up a Cryptomania boundary. Just what the doctor ordered for team Superkings. 162 for 6 it is. 2 balls left in the 17th over. Prakash has been relatively good in this over. He's also picked up a wicket. This time, streakish Cryptomania boundary. Not intentional, but 4 welcome runs. Frustrating times for Prakash Shilinga and the Rising Titans. Score after 17 overs, 166 for 6. Six minutes and they have to bowl 3 overs. It's going to be tight. Score after 17 Spectra Group. Barrage Machinery overs 166 for the loss of 6 Ketal Sanya construction wickets.
Sanjit on to 48 with that single. The projected score has come down to less than 200. Most of the while it was 200 plus, something in the region of 208, 210. Not so well balanced. That is such a good run from Sanjit. Very alert. That is exactly what you call street smart cricket. Now he would like to have most of the strike here. That should be the case. He's on to 48 of 28 balls. Oh, missing out. What an opportunity. The bottom hand coming into play. Prakash Linga in the mid-wicket area. That single takes the score to 168. The current run rate 9.57. 169 for 6, 17.4 overs. .171 ball to come in over number 18. Oh, such a good attempt. That is the half century for Sanjit Srivastava. 51. One more very good knock. Each and every time he's walked to the wicket, he's come up with a blazing performance. One more very good contribution by the captain himself, leading from the front. Sanjit Srivastava on a roll. Raghav has given away 27 runs in his 3 overs without having picked a wicket. He'll have to get that consistency factor into his bowling. What a brilliant cricketer he is. Such a smashing batsman. And he can bowl those unplayable deliveries. But he's got to get that consistency in bowl letters into his bowling to be an impact bowler. One of the young guns, one of the most promising young bloke at the GSC. That's Raghav Ramchandran. A seasoned pro, that's Prakash Linga. If team Rising Titans can restrict Superkings to less than 190, if they can get this team folded up around 190, it's going to be a good thing. Sort of a fight back. That is a brilliant take by Vipul Gala. Once again, it comes into the third umpire's box for a referral. In the meantime, a warm welcome to Daksh Agarwal. Daksh Agarwal, the leading man on the batting chart.
Quite a few deliveries that he has missed. 170 for 6. 172. Nicely taken, nicely taken. That is the end of Sanjay Srivastav looking to make a comeback. The last few overs, team Rising Titans has been quite disciplined. At one point in time, team Super Kings were well on course to post something in the region of 200 plus. In fact, they were on course to be putting up 210 runs on the board. At this point in time, 190 looks difficult. So that is sort of a comeback, but you got to give it to team Super Kings that they already have a daunting score on the board. Credit to team Rising Titans for making a comeback. Ketal Sandhya concession wicket, the big one. The new man in, Siddharth. The final ball coming up in the penultimate over. The 19 Spectra Group, Barrage Machinery over. At the moment, 173 for 7. End of 19 overs. 173 for 7. The third umpire has imposed a 1 over penalty. That's the message from the third umpire. 1 over penalty has been imposed. So there will be one extra player inside the circle. Welcome to Vishal Bhai Todi. Doing well towards the end. That is Rising Titans. Indeed, that is some sort of a comeback. Definitely a mini comeback. Oh, he does well. Sunil Raheja is such a big man. A good effort by Sunil. Good hands. Well fielded. 2 runs taken. 19.3 overs, 178. 178. They have at least cut away 25 to 28 runs from that projected score in the last
3 overs. So that's a good redemption job by team Rising Titans. Oh, that was a loose delivery. Fortunately, no set batsman at the wicket. And that is why Raghav Ramchandran gets away with that loose delivery. 2 balls left for Raghav. 179 it is. That's going to be a Cryptomania boundary that will ease the tension in the camp of Team Super Kings. They wanted this boundary to break the shackles. A carpet extra cover drive for a well-timed Cryptomania boundary. 183, final ball coming up. That's into his belly. 184 to win when they come back. That is the target for Team Rising Titans. Time for the mid-innings break. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Ready?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in
Welcome back. Exactly as in the first two matches, it's going to be Deepan Patel to be bowling with the new ball for team Super Kings. In the first two matches, he's picked up wickets in the very first over. Is he going to be continuing with the same pattern, or that pattern is going to be broken tonight? Remains to be seen. It's going to be Kumar Mahajan, the man on strike, and Sashwa Junjunwala at the non-striking end. Playtime. Looking to nudge it away. They've got a man in that single saving position. Bowling to his field is one of the unique selling points as far as Deepan Patel is concerned. Well ball, well left. Watching the ball till the very end, and then he lets it go. He made sure that he knew where his off stump was. He covered the base and then he left that delivery. What a good knock by Kumar Mahajan in the first match. A super knock from him. That should be a Cryptomania boundary. Some room on offer. This is a new ball. It's going to be racing into that boundary fence. The ball skidding onto the bat. Up and away Kumar Mahajan over that boundary. To the credit of team Rising Titans, they at least cut short 25 to 28 runs from what was supposed to be a grand total for team Super Kings. In any which ways, it's a daunting ask to be chasing down this kind of 180 plus score. It's always going to be difficult. It's always going to be challenging, but not impossible. Should be interesting, this run chase. Perfect delivery and good defense, tight in defense. This is exactly what Deepan Patel will be looking to do. To go through the gateway, to crash through the defense. Very well done. That will be the second, maybe. So wait, please wait. Checking. Not to worry. That's a Cryptomania boundary. The bottom hand coming into play. That's a good over for team Rising Titans to get off the mark.
10 runs in the very first over. Kumar Mahajan, a confident start for him. There were two occasions wherein Dipan Patel gave some room on offer to the left-handed Mahajan, and he made the most out of both the occasions, notching 2 boundaries. Welcome to Mr. Shivels Kumar. Unexpected lines. Sachet Agarwal gets the new ball to be bowling from the in-orbit end. It's going to be Kumar, the left-handed man on strike. In fact, Sachet will love to bowl to the left-handed batsman with the ball going away from the batter. So that's a good prospect for Agarwal. Well done by Dipan. One of the most prolific run getters at the GSC. One of the top batters at the GSC, Sashwat on strike. If Sashwat can come into his own, this is going to be a cracker of a night. Welcome to Sushil Gautam. Just putting bat to ball, not looking to hit the ball hard, just looking to have that early feel. Treating the bowling on its merit will be the Mool Mantra, will be the match template for Sashwat and Kumar Mahajan, at least as far as the power play is concerned. What a delivery. That's a peach of a delivery. The batsman beaten, all ends up lock, stock and barrel. चारों खाने चित किया और इसी वजह से मैंने कहा था कि he will not mind bowling to the left-handed batsman. बहुत ही बढ़िया सिम प्रेजेंटेशन, बढ़िया शेप. भवनीत बिरदी फील्डिंग करते वक्त भी थोड़ा सा आक्रामक रंग दिखाना होगा. अगर सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने इंपैक्ट कराना है तो अच्छी फील्डिंग की बैसाखी यहां पर उपलब्ध करानी होगी फील्डिंग यूनिट ने. They have to excel in all the 3 departments. They have batted well. They have to bowl and field well now to end up on the winning note.
That's a probing line, bit of a test here for Sashwat. At the end of two Spectra group, Barrage machinery overs, 13 for none. That's a very good over from Sachet, the first one on the spot, giving away just 3 runs in that over. Deepan to continue. Early days in this run chase, a long way to go. Oh, what a brilliant piece of wicket keeping there. Breaking at the back of that run chase with that quite important wicket. Ketal Sanya concession wicket. That was the arm ball. It was angled into the batsman. No turn in that one. Missing the line. The wicket keeper does the rest. The young gun Kuwar Mahajan on his way back to the pavilion. A little disappointed. There was a big gap between the bat and the pad. The bat came down from around that gully region. Should have come down from the first or the second slip area. And that is why that enough a gateway for the ball to crash into the stumps. Not covering his bases. Ketal Sanya construction wicket. Devan Patel once again providing that early breakthrough. इसके पहले के 2 मैचेस में पहले ओवर में ब्रेक थ्रू दिलाया था. पहले मैच में 2 विकेट्स लिए थे पहले ओवर में. दूसरे मैच में अपने पहले ओवर में 1 विकेट लिया. तीसरे मैच में पहले ओवर में कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन दूसरे ही ओवर के पहली गेंद पर उनके हाथ वो सफलता लगी. तो नई गेंद के साथ काफी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए दीपन पटेल. इस बीच गौरव तलवार का स्वागत है. हमारे को कन्वीनर मोनिश शाह, साथ में कैप्टन अभय, अमरकांत जैन. ये कान से सुनने का, ये कान से बाहर निकाल देने का. निकालो सर, ये कान से निकालो आप माइक के सामने. तो मैंने तो सुना ही नहीं ना. उन्होंने मुझे बोला तो मैंने वो क्या बोला उनको कि ये कान से सुनने का और ये कान से बाहर निकाल देने. चले गया चुपचाप. फिर से एक बार आर्म बॉल. नई गेंद के साथ ज्यादा गेंद को टर्न कराने की कोशिश भी नहीं करते. जब कभी आप दीपन पटेल जैसे गेंदबाज को एक जल्द विकेट दे देते हो तो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं. फिर विहान टेक बहादुर सिंह का अब विकेट पर आगमन होता हुआ. और एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर, हुनर का पौधा. और एक पूरा सम्मान दिया उस अच्छी गेंद को.
3 स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर अपने पहली जिम्मेवारी को निभाया है। निभाने के बाद तुरंत ही पेविलियन में वापस आते हुए दीपन पटेल उनके स्थान पर सिरोया का अब आगमन होता हुआ विकेट पर। Welcome to Miss Deepa Salvi, the HOD, and Deepa Kale. Deepti Kale. Tentative push there from the young lad. That's off the outside edge. Once again, the same kind of a push. This time taking the outside edge. Those are tight lines from Sachet. A teasing line and length. Sashwat. What a gem of a player this man is. Sashwat Junjunwala. He's not been able to get going in this season. Early days, this is only the second match. Now this is the big opportunity for Sashwat to get his eye in, spend some quality time at the wicket and get going. We have with us one of the 3 centurions, Daksh Agarwal, 142 not out. That is immaculate bowling. Is getting into the mind of Sashwat, looking to manufacture a shot that wasn't there. He's got such an electric range of shots. In spite of that good range of shots, he's looking to manufacture shots that aren't there. So that is a teasing line and length, well bowled by Sachet, putting the pressure on Sashwat. Score after 4, Spectra Group. Barrage Machinery overs 17 for the loss of 1 Ketal Sanya construction wicket. Welcome to game number 10 as far as the Anandrathi Gsc T20 League Season 5 is concerned. The title sponsor Anandrathi, over 30 years of excellence. The co-sponsors Cryptomania, the web series, Chetak Ply, Maharaja of Ki Pasand, Ketal Sanya Construction, Rising Boundless, Spectra Group, Barrage Rubber Processing Machinery, Gifting Partners, Me and Specs, Hashtag Nuts. One of the co-sponsors, Sejal Realty,
So big thank you to all our patrons and supporters. Relief partner Zandu Fast Relief. Thank you to Ravindra Mataru for the refreshing tea and coffee counter. Pritpal Singh Baraj. जीएससी के स्नूकर टूर्नामेंट में जो कि एक बड़ा मंच था, रनर्स अप का खिताब प्राप्त हुआ प्रितपाल सिंह बराज को आज ही की शाम। रन आउट होने की संभावना पूरे आसार है और वे जो बॉडी लैंग्वेज में वहां पर केतन सर या कंसेशन विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है Pritpal Singh Baraj on his way back to the pavilion is Vihan Tegh Bahadur Singh. Worth a shout. That run out will give Pritpal Singh Baraj some extra confidence, and he's been the runners up in the snooker tournament. Will be looking to carry that good form onto the cricket field as well. Oh, good effort. He got to the ball but could not push the ball back in. Oh, he's injured. Is he injured? Oh, he seems to be in some kind of discomfort. Oh, my word. Seems to be okay. Chale, koi nahi. All is well that ends well. We have Amar Khan Jain, Vinay Surana, Monish Shah, Pramod Kashyap to monitor the things. Priyanshu Singh, Siddhant, Jitesh. What a shot. This time no chances. Up and over she goes into the stands. Chetak plays sixer. That will be some sort of a relief for Shashwat. A couple of such shots and he will be back into his own. Chetak plays six. Maharaja ki pasand.
The warmest welcome to the parents of cricket की पाठशाला दीपन पटेल के पेरेंट्स यहाँ पर है, स्वागत है. Terrific product. छब्बीस मिनटों में अब आगे के 5 ओवर्स मुकम्मल करने होंगे. 5 स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के समाप्ति के बाद 28 पे 2. ग्रेट हैंड्स, नजाकत से खेला. देखे कितनी बढ़िया तरीके से पोजीशन बनाई, बहुत ही जल्दी भाप लिया. भापने के पहले शायद उन्हें पता था कि साचेत की अगली गेंद कहां पे आने वाली है. बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन. क्रिप्टोमेनिया चौका. ये लाइन अच्छी है साचेत की. Once again looking to play that kind of a scoop shot. So much of danger in that kind of a shot. 5.3 overs, 33 for 2. $33 for 2.
What a shot, breaking the shackles over that monster hit. Stand and deliver. Chetak plus 6. महाराजाओं की पसंद. Score after the Spectra Group, Barrage Machinery power play 40 for 2. 84 balls and 144 required to win this one. Pritpal continues. What a good looking shot. That is such a good looking punch. That's good cricket. One bounce into the fence, well in control. Cryptomania boundary. Just going through with the shot. Not holding himself back. What a turnaround it has been for Dhananjay Vengurlekar. He's been given the responsibility of donning the wicket-keeping gloves. Also, he's been promoted up the order in the number 3 position. So, team Superkings giving the space to Dhananjay Vengurlekar to exhibit his all-round skills. A very young, passionate and a positive cricketer, Dhananjay Vengurlekar. Immense potential there. Raghav Ramchandran.
Such a good shot, standing tall on his toes, grounding the ball in. Score after 7 overs, 47 for 2. हमारे बीच हमको गौरवान्वित करने वाला जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल साहब ने हिस्सा लिया था, वो एक कर्नल साहब यहाँ पर मौजूद है। तहे दिल से उनका स्वागत है। बढ़िया टाइमिंग, क्रिप्टोमेनिया चौका, चीरती हुई वो गेंद निकली। वो बदले में लग रहे हो यार, आपको ढीले लग रहे हो आप। यू आर नॉट द सेम ओल्ड मैन व्हाट आई सॉ लास्ट टाइम। कैप नहीं और यार ये भी तोंद भी बाहर आ गए है ना। आई कैन सी द डिफरेंस। सो वी आर द ओनली वन। यादव ने अभी सब जवान हो गए। वेलकम टू जयेश भाई जोगिया।
अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। हमारे साथ जिस कर्नल साहब ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, कर्नल धीरज गुप्ता सर हमारे साथ है, उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या करारा जवाब दिया है, घर में घुसकर। ये नया वाला भारत है और ऐसा एक लीडर हमारे बीच है जिन्होंने हम सभी का खोया हुआ जो सिंदूर था उसका हिसाब आपने चुकता किया। सभी को आपने आगाह किया है कि अब ये नया भारत है, इंडिया विल नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन। सर आपने नेतृत्व किया, कुछ पल का बयां कीजिए हम सभी के सामने सर। ओवर टू कर्नल धीरज गुप्ता सर। मैं अभी यही कह सकता हूँ कि लास्ट 3 साल से अभी हम लोग उरी में थे। मैं और मेरी 1200 प्लस जो टीम थी, हम लोगों ने आप लोगों की बेस्ट विशेस से 5 सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए एंड लास्ट ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें प्रिपरेशन से लेके बाकी बस ये कह सकता हूँ कि जो लोग वहाँ देखकर आ पाए, दुश्मन 160 मीटर दूर था और उनको उस तरह का जवाब दिया गया जो लाजमी था। थैंक यू वेरी मच सर। जब तक आप जैसे लोग हमारे इस सरहद को बड़ी पुख्ता तरीके से सुरक्षित रख रहे, वी कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप। थैंक यू सो मच सर। अ बिग सैल्यूट विनोद पोद्दार सर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आई एम सो लकी मैन कि मैं आज ही इनके जो जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे मैं उरी में जाके आया। और आई टेल यू कि हम लोग बंकर में रहे रात को 10,000 फुट की हाइट पे। पहले तो हम लोग वहाँ पहुँचे कैसे, रात को कैसे रहे, और इनका पूरा ऑपरेशन जो डेली रूटीन है वो हमने देखा। तो मैं बोलता हूँ हेड्स ऑफ यू सर, रियली जो आप लोग कर रहे हो, हम लोग तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो मैं फिर एक बार ऑल द बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम माई होल क्लब टीम एवरीबडी। थैंक यू सो मच कर्नल सर। अब इत्मीनान से हम क्रिकेट खेल पा रहे हैं, और पिछले 20-22 साल से या 15 साल से तो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसे लफड़े भी नहीं हो रहे। तो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्रिकेटिंग फर्टर्निटी, सारे स्पोर्ट्समैन हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू नो, जो हमने वहाँ पर भी बोला कि आपने जो घुस के मारा है ना, तो अभी उसकी ताकत भी नहीं है कि हमारी तरफ नज़र उठा के भी देखे। सो वी फील ऑल्सो वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर मैं बताऊं कि मैंने भी कल बहुत गोलियां चलाई। इन्होंने एक है ना हमको पूरा ये चांस दिया, बहुत हमने है ना काफ़ी गोलियां चलाई, और रियल में मतलब है ना इससे रियली मतलब। सर आपके यूनिफॉर्म को और आपके ब्रेवरी को फिर से एक बार हम सलाम करते, सैल्यूट करते। थैंक यू सो मच सर। द होल नेशन इज बिहाइंड यू सर। Yes, we are having a small break, लेकिन ये बनता है। हमारे भारतीय सेना के यूनिफॉर्म का रुतबा है, ये इनका रसूख है। That's Colonel Honorable Shri Dheeraj Kumar Gupta sir and his team. पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं। गेम स्टार्ट करते। यस सर, सॉरी फॉर द ब्रेक गाइस। One more smashing shot, and that's going to be straight to the man in the deep.
दूसरा है, दूसरे में नहीं आया, नहीं आया, छोड़ दो। Standing tall and putting the ball into that extra cover region. We are into over number 9. 64-2 it is. Raghav Ramchandran is off to a reasonably decent start. He needs to now carry on from this kind of a situation, consolidate the partnership. One ball left in over number 9, and that's for Fadia. Oh, what a stupendous catch! That is the big fish in the net. Shashwat on his way back to the pavilion. This dismissal is going to be having a huge bearing on the result of the match. It's going to be having a big ramification on the outcome of the match. Very nicely judged. He kept his cool and at the very last moment accomplished that feat of taking that low catch nicely into his bucket of hands. Well done. Ketal Sandhya construction wicket, the big one. The big one that will set up the stage for Team Super Kings as they look forward to defend the 180 plus runs that they have put on the board. They're confirming something. So yes, let's do the job. Superbly done. Shashwat will acknowledge that kind of a fielding effort. Under pressure, a fine catch taken, a good effort. That definitely will be in contention for the catch of the match award. Surely, unless somebody creates one moment of magic, this catch should back the title of the best catch. स्वागत है जयेश भाई जोगिया का. जयेश भाई यहां पर आए तो 45 प्लस की टीम की तैयारी करके जाएंगे शायद. वेलकम टू विपुल कल्याणी. Big thank you to Vinod Poddar sir for inviting Colonel Dheeraj Gupta sir, who was the leading man as far as Operation Sindoor was concerned. Such a proud moment for all of us. हमारी जो सरहद है उस सरहद को बिल्कुल सुरक्षित और महफूज रखने वाली हमारी भारतीय सेना को फिर से एक बार जीएससी की तरफ से मैं बड़ा सलाम करता हूं. We've got one of the biggest armies
in the world. The biggest army, number one, of course, that's the United States of America. जिस तरह से घर में घुसकर ठोका हमने उन लोगों को, एक करारा जवाब दिया. अब यहां से आगे चलते हुए सर उठाकर नहीं बातचीत करेंगे, निगाहें भी ऊपर नहीं करेंगे. जरूरी था इस तरह का जवाब देना. जिस तरह से हमारी बहनों का वो सिंदूर उजाड़ा, वो जवाब बनता था, करारा जवाब दिया है. वी आर सो प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी. एंड जो कर्नल यहां पर आए थे, ही वॉज लीडिंग मैन एज फार एज द ऑपरेशन सिंदूर वॉज कंसर्न्ड. और पूरा ऑपरेशन सिंदूर उनके नेतृत्व में, उनकी निगाह में वहां पर अंजाम दिया उन्होंने. वैसे कर्नल धीरज कुमार गुप्ता जी यहां पे थे. Score after 9 overs, 61 for 3. Required 100 is 11.18. Looking at the fact that this man is back in the pavilion, it's going to be even more of a daunting task. But still, they will be game to chase down this total. They got to stay positive. They got to hold on to that element of self-belief. The new man in, that's the owner and the skipper for team Rising Titans, Mr. Sunil Reja. He's been working on his fitness, so many net sessions. He's got a personal coach in place. He's doing all the right things as far as match preparedness is concerned. Not taking things lying down. Sunil Reja looking to put in his best effort as the leader of the team. जो ऑफ फील्ड जो भी कुछ करना चाहिए वो सभी चीजों को करते हैं सुनील रहेजा. सुनील रहेजा का पूरा फैमिली हमेशा हर मैच में अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए मैदान पर पहुंचते हैं. दे डू नॉट मिस अ सिंगल मैच. 62 for 3. We are just about at the stroke of the drinks interval. 4 balls to go. फिर से एक बार विकी भाई मेहता का स्वागत है. क्लीन बोल्ट. ड्रिंक्स इंटरवल के पहले वो विकेट देना, यानी कि ये अब और भी ज्यादा चुनौती भरी स्थिति होती हुई. बड़ा केतल सान्या कंसेशन विकेट. ड्रिंक्स की ट्रॉली अब अंदर आएगी. इस बीच कुलदीप सर और मैडम जी का भी स्वागत है. टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
that consistency factor going. Every over he bowls a couple of unplayable deliveries, but he's got to get that consistency very prominently into his bowling. Forget the bowling at the moment. His total focus should be to take his team close to the target, to give him company. That's one more good batter, Prakash Linga. Prakash Linga has been in this kind of a situation umpteen times. Nothing new. First things first, they have to build the team out of trouble. It's time for some resurrection here. They need to build a partnership. As simple as that. They cannot afford to lose a wicket at this stage. They need to build a partnership in the post-drinks interval. They got to carry on for the next 4 to 5 overs. And whilst they do the resurrection job, they also got to make sure that they do not spare any loose deliveries. 4 wickets down. There is still some ammunition left in the arsenal as far as the batting lineup of team Rising Titans is concerned. The Whispering Death brings himself into the attack. That's Sanjay Srivastav. Team Super Kings always one of the most exciting teams. Super Kings नाम में ही वो जलवा है. हर साल हर टीम में कोई ना कोई बड़े चेंजेस होते हैं ऑक्शन के चलते, लेकिन हमेशा ही टीम सुपर किंग्स ने एक दबंग टीम बनाई है. जयदेव भाई गुप्ता, अमरदीप सिंह बराज, मिकी मोदी, ये ओनरशिप स्टेक है टीम सुपर किंग्स का. दूसरी तरफ टीम राइजिंग टाइटंस के को ओनर सुनील भाई रहेजा. पहले मैच को जीता, ये दूसरा मैच खेलती हुई टीम राइजिंग टाइटंस. सुपर किंग्स के लिए तीसरा मैच, 1 जीत 1 हार. देखना है कि आज की शाम क्या होता है. इस वक्त स्थिति अनुकूल है. Nicely getting behind the line of that delivery. Both these batters, they got to hold on to that self-belief. अग्नि परीक्षा है राइजिंग टाइटंस के लिए. खरा उतरना होगा इस अग्नि परीक्षा में. सोना तब कर ही खरा होता है. इसी मैदान की भट्टी से पक कर निकले ये सारे प्लेयर्स. एक दूसरे की फितरत को भली भांति जानते हैं. ऊंची गई है, क्या वो गेंद लंबी गई है? शायद नहीं. कैच छूटा, सपना टूटा. शायद मैच छूटा ऐसा तो नहीं कह सकते. 4 विकेट्स गिर चुके, लेकिन ये आसान सा मौका था. ये भी और एक बड़ा बल्लेबाज है राघव रामचंद्रन. जीवन दान दिया है राघव को. 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. कुलदीप सर एक ऐसे शख्स है जो हमेशा ही हम सभी की हौसला अफजाई करने के लिए आते. मैडम तो है ही, लेकिन हमेशा कुलदीप सर सबसे पहले आते हैं. थोड़ा सा टेंटेटिव पुश. विपरीत परिस्थिति को मात देना होगा ताकि ये जो प्रतिकूल स्थिति है वो अनुकूल स्थिति में परिवर्तित हो. विकेट पे डटे रहना होगा और उसी समय थोड़े से बड़े रन से तेज रफ्तार से बटोरने भी होंगे. फोफाडिया के लिए ये मंच बिल्कुल सटीक तरीके से साजा हुआ है. अच्छा शॉट.
ना शुभंकर वहां पहुंच सकते हैं ना ही गौरव देवली। वो गेंद बीच में से चीरती हुई निकली क्रिप्टोमेनिया चौके के लिए। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन उससे भी बढ़िया वो गैप जिस तरह से पिक किया प्रकाश लिंगा ने, काबिल तारीफ बात। केवल आत्मविश्वासी अब टीम राइजिंग टाइटंस की नैया पार लगा सकता है। अच्छे क्रिकेट के साथ दुआओं के काफिले को भी साथ ले चलना होगा। $70 for 4. चले दौड़ तो लगा ये फील्डर ने, भवनीत ने हमेशा ही वो बिल्कुल पॉजिटिव होते, घुटने नहीं टेकते कभी भी भवनीत, और वहां पर गेंद को रोका है, बड़ी तेज रफ्तार से चेस किया, वो पेस निकाल दी थी शॉर्ट पेस से वो फील्डर जो बैकवर्ड ऑफ पॉइंट में है, प्रितपाल सिंह बराज। 11वां ओवर अपने प्रगति पथ पर है, रन संख्या 72 रन, और इन 72 रनों को जोड़ने में 4 बल्लेबाजों को पेविलियन वापस जाना पड़ा है। स्थिति थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई टीम राइजिंग टाइटंस के लिए, नाजुक स्थिति है थोड़ी सी। बहुत बार इस तरह के शॉट्स जब वो लेमन कट लगती है इनर एज के बाद वो स्टंप्स में क्रैश कर जाती है। बहुत ही हुनर है राघव रामचंद्रन में, हम सभी जानते हैं, प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। What a shot! What a shot that is! Good hands. That is absolutely supreme hand-eye coordination for a flat 6. The start to the year for Fadia this season has not been so good. He's gone for some runs. Score after 11, Spectra Group. Barrage Machinery overs. 78 runs for the loss of 4K Tarsania construction wickets. The biggest thank you to our title sponsor Anandrathi, over 30 years of excellence. The co-sponsors Cryptomania the web series, Chetak Ply, Maharaja of की पसंद, K Tarsania construction, Rising Boundless, Sejal Realty, Spectra Group, Barrage Machinery, gifting partners Me and Specs, hashtag Nuts, relief partner Zandu Fast Relief, recommended by physiotherapist Ravindra Matharu. Big thank you to him for that refreshing tea and coffee counter. So those are our sponsors, our patrons. Big thank you to them on behalf of Mr. Kaushik Mehta. That was the loose delivery. It had to be dispatched away. It had a Cryptomania boundary written all over it in bold letters. Doing the needful, that is Linga. With that boundary, the scoreline reads 82 for 4. Welcome to Karan Baji. We have a good crowd gathered here on the sidelines. Thank you to all the cricket lovers watching the match through that lens of sportsman spirit, cheering good cricket. As I was mentioning earlier, Superkings has provided that platform to Dhananjay Vengurlekar. He's been given the wicket-keeping gloves. He's been promoted up the order, the number 3 spot, backing him to the hilt. That's Superkings. What will Dhananjay Vengurlekar do with these opportunities? .
Bit of a half-hearted appeal, effort from the man in that longer position. Is it Shubhankar? The batsman had in fact made a error by that half-hearted shot. That was in the slot. That could have easily gone for a 6. Half measures. He would have already realized it. For a moment, the heart was in his mouth. Kleptomania boundary. Big hopes on these two batters now. The change in pace. The off-cutter. He's trying out the variations, that is picked up the tricks of the trade. You do not want to be monotonous. You do not want to be a one-trick pony. A workaholic single as he puts the ball into that mid-wicket area. Shot selection is always the key, as I always keep mentioning. Even in a T20 game, you've got ample time to pick and choose. Raghav Ramchandran and Prakash Linga looking to resurrect this innings, looking to stabilize the innings. What an all-rounder this man is turning out to be. The stocks are on the rise for Sanjit Srivastava like never before. He's been handed over the captaincy stuff, and it's good to see that he's not taking any undue pressure. He's playing his natural game as a batsman. 48 balls and 96 runs to win the match. Exactly 12 and over is what they require from here on. Back into the scheme of things, that is cricket ki Pathshala. Dipan Patel. Pramod Kashyap, Monish Shah, Amarkan Jain monitoring things at the moment. बहुत ही बढ़िया अनवेलिंग सेरेमनी को कल अंजाम दिया क्रिकेट कमेटी ने कौशिक भाई मेहता के नेतृत्व में. Lots of razzmatazz in that unveiling ceremony, co-anchored by Amarkan Jain and Amit Mehrotra, the two key organizers. Wonderful and very colorful trophy unveiling ceremony. This man is getting better with age. He's like wine, getting better. Soft dismissal. ये बड़ा खेत अलसानिया कंसेशन विकेट है. देखिए यही गलती की राघव ने. स्लॉट में वो गेंद थी, आमंत्रित किया था, जाल बिछाया था, जाल में फंसे. He took the bait. He was lured into playing that shot. The field was set for exactly that kind of an incident. The talented Raghav Ramchandra back in the hut. K. Talsania construction wicket. Half the team back in the pavilion, that is. Now this is quite an important wicket. In comes Arpan Tibrewala.
88 for 5. 47 balls and 96 runs to win the match. That's Dipan Patel to be bowling to Arpan Tibrewala, one more smashing batsman. Can Arpan now showcase his batting prowess? Quite an experienced man. स्वागत है रमन भाई खत्री का. ये इवेंट्स का सीजन शुरू हो चुका है. इज गोइंग टू बी वेरी बिजी. एक के बाद एक. मिस्टर रामचंद्रन, प्रगति पथ पर है 13वां स्पेक्ट्रा ग्रुप. बराज मशीनरी ओवर. 89 रन्स 5 विकेट्स के नुकसान पर. दीपन पटेल का स्पेल अभी तक का 2.2 ओवर्स, 12 रन्स दिए है, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है. 2 बल्लेबाजों को अपनी आगोश में ले लिया है दीपन पटेल ने. मेंटल स्ट्रेंथ, उनका फिटनेस, अपनी काबिलियत में विश्वास और अपना फोकस, ये 4 पहलुओं के इर्द गिर्द दीपन पटेल का गेम सजा हुआ. किस तरह का फाइट बैकअप राइजिंग टाइटंस यहां पर प्रस्तुत करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा. बड़े नॉक्स खेलने होंगे प्रकाश लिंगा और अर्पण टिब्रेवाला को. सक्षम प्लेयर्स है, काबिलियत है. तेरह ओवर्स की समाप्ति के बाद 91 रन्स बने हैं. आधी टीम पेविलियन चलती की है यहां पर टीम सुपर किंग्स ने, आधी टीम को. बयालीस गेंदों में 93 रन्स बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए. थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. यह बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट है. थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है, उससे ड्यू फैक्टर के चलते फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. गेंद को ग्रिप करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा. बल्ले पर आएगी गेंद स्किड होकर. आउटफील्ड थोड़ा सा भारी होगा. ड्यू फैक्टर के चलते पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है. लो फुल टॉस पूरी तरह से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया अर्पण ने. ये कैच तो 10 में से 10 बार लेने हैं, नहीं मिस कर सकते. विशेष रूप में जब यंगस्टर होगा वहां पर. गौरव देवली ने मिस किया उस आसान से कैच ने. जीवनदान मिला है. स्वागत है योगेश शर्मा का. थोड़ा सा हॉलो साउंड हुआ आया जब वो बल्ला कनेक्ट हुआ गेंद के साथ. थोड़ा सा हॉलो साउंड.
Superkings in the driver's seat at the moment, looking to fight back. That's Prakash Linga and Arpan Kumar Tibrewala. Chance for Prakash Linga and Arpan Tibrewal to prove their salt. They have been picked up in the team because they are such good cricketers. The team needs both these batters to fire in this kind of a tight situation. The idea is to get as close as possible to the target. वो नेट रन रेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा. वो आपके जहन में नेट रन रेट का होना जरूरी है. ये लॉन्गेस्ट टूर्नामेंट है. हर टीम को 8 राउंड रॉबिन लीग मैचेस खेलने का अवसर प्राप्त होगा और आखिरी लम्हों में वो नेट रन रेट सर्वाइविंग फैक्टर हो सकता है. आपकी नैया पार लगा सकता है वो नेट रन रेट. चलिए, भागने की कोई जरूरत है ही नहीं. रूम दिया और कामयाजा भुगतना पड़ा क्रिप्टोमेनिया चौके के साथ. आने वाली 27 मिनटों में 6 ओवर्स मुकम्मल करने होंगे टीम सुपर किंग्स ने. सौ रन्स बन चुके टीम राइजिंग टाइटंस के लिए. 36 में 84 रन्स बनाने हैं. 36 balls and 84 runs to win the match. This is going to be the last over in the spell for Dipan Patel. 2 विकेट्स ले चुके हैं. अपने पहले स्पेल में ही वो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर जाते ऑपोजिशन पर दीपन पटेल. पहले 2 मैचेस में पहले ओवर में विकेट्स मिले. आज की शाम दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला. हमेशा ही अपनी गेंदबाजी का जादू कर दिखाते हैं. रामचंद्रन, जयेश भाई जोगिया, श्रीवत्स कुमार 45 प्लस की प्लानिंग शुरू हो चुकी है. शायद दिसंबर महीने में या अर्ली जनवरी में वो ऑक्शन हो सकते हैं. द सिग्नेचर इवेंट ऑफ द गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, दैट इज द GSC 45 प्लस T20 लीग. सबसे बड़ा इश्तिहार मुंबई शहर में 45 प्लस क्रिकेट को लेकर. ये वाला GSC T20 सबसे बड़ा मंच in terms of talent, potential, experience. All the biggies at the GSC, they play this tournament. Unfortunately, Aryan Patni, Rohan Gajjar, Vedant Gadia, Yash Gadia, Jugraj Mehta, the top 5 not able to play the tournament. People like Daksh Agarwal making up for the absence of those players. Sashwat, Raghav Ramchandran, such terrific players out here. That is the lemon cut. Happy with the couple. ड्यू फैक्टर है वो आउटफील्ड थोड़ी सी हेवी होगी. इतनी तेज गति से गेंद ट्रैवल नहीं करेगी अनलेस यू टाइम्ड इट वेल. या तो फिर गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाइए. वो ड्यू फैक्टर का कोई सवाल ही नहीं. Dipen Patel's spell is coming to an end. 2 balls left in his spell. 2 for 18 of 3.4 overs. Those are the figures for Dipen Patel so far.
The two umpires, Ajit Chauhan sir and Naveen sir. The umpiring standard has been very good so far, touch wood. Two noises there. End of the spell for Dipan Patel. 4 overs, 19 runs. He's picked up 2 wickets. 15 स्पेक्ट्रा ग्रुप बराज मशीनरी ओवर्स के पश्चात 107 रन्स, 5 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट्स। आने वाली 30 गेंदों में अब 77 रन्स बनाने होंगे। थोड़ा सा और मुश्किल होता हुआ अभी भी नामुमकिन नहीं है। 22 मिनटों में 5 ओवर्स को अंजाम देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। अभी तक आशीष सिरोया का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रकाश शिलिंगा के लिए अच्छी शुरुआत, 14 गेंदों में 22 रन्स बनाए। अर्पण अच्छा साथ निभाते हुए 12 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन्स बनाए है। एक साझेदारी रंग लाती हुई ये देखना है कि कब ये दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर्स चेंज करते हैं। थोड़ा सा और नजदीक जाना होगा टारगेट के। घुटने नहीं टेकेगी टीम राइजिंग टाइटंस, क्योंकि एक एक्साइटिंग टीम है। इस बीच आगमन होता हुआ हमारे सुपर किंग्स के को-ओनर और हमारे ओवर स्पॉन्सर बराज मशीनरी, बराज रबर प्रोसेसिंग मशीनरी, इंडिया's largest rubber processing company, that's Baraj. Welcome to Amardeep Singh. He is amongst the top 3 snooker players at the Goregaon Sports Club, maybe amongst the top 2 arguably, Amardeep Singh Baraj. ये जो यहाँ पर जो क्रिकेटर्स है, ज्यादातर क्रिकेटर्स एटलीस्ट 60-70% ऑफ द क्रिकेटर्स प्ले more than 2-3 games, and they are so good not just at cricket but at least 1 or 2 other sports disciplines as well. Multi-talented guys. Good shot, no danger in that shot. Stand and deliver. Prakash Linga, Cryptomania boundary, is looking to take the fight to the enemy camp. Prakash Linga has got to show to the world what is made up of. Quite a regular on the professional cricket circuit in and around Mumbai. Time to showcase his skills. सत्ताईस गेंदों में 71 रनों की जरूरत है। सोलह रनों की रन रेट से अब इस हर ओवर में आपको चेस डाउन करना होगा। 16 रनों की रन रेट अगर आपको लक्ष्य तय करना है तो कोशिश करती रहनी होगी। मुश्किल है। चौका आसान नहीं है आशीष सिरोया के लिए। और गेंद हमेशा ही उनके पीछे जाने वाली थी। मिस टाइम शॉट था, मिसक्यूट शॉट। खेलना चाहता लेग की दिशा में और गेंद गई बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के ऊपर से क्रिप्टोमेनिया चौके के लिए। स्वागत आ रही है 4 रन्स।
थोड़ा सा सर हवा में था, बैलेंस नहीं थे और उसी वजह से वो कनेक्शन नहीं हो पाई, फेल हुआ। ये आखिरी बड़ी उम्मीद की किरण प्रकाश लिंग और अर्पण। बैकआउट ऑफ पॉइंट आशीष सिरोया, अच्छी फील्डिंग, 1 रन की बढ़त। 16वें ओवर की अभी 16 ओवर्स के बाद 118 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 66 रन बनाने हैं। Required run rate 16.50, 17 and over. Your guess is as good as mine. They need a couple of 20 plus overs, at least couple of them, to make a way back into the match. It's going to be Pritpal Singh Baraj. Things are indeed tight for Rising Titans. इसके पहले कि वो उंगली उठती स्वयं ही चल पड़े केतन सान्या, कंसेशन विकेट। थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा था जिसके चलते वो गलती कर बैठे। डेस्परेट टाइम्स फॉर राइजिंग टाइटंस। अब यहां से आगे चलते हुए और बड़ी चुनौती है, और भी बड़ी चुनौती। अब दिस इज लाइक अ माउंट एवरेस्ट टू बी स्केल्ड। (23 balls, 66 required). Looking down the barrel of the gun, Rising Titans, they've been thrown to the deep end. At the moment, 350 plus people watching the match live. 350 YouTube के दर्शकों का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आपका यही स्नेह बना रहे। काफी इंटरेस्टिंग मैचेस आपको इस सीजन में देखने को मिलेंगे। So thank you to all the YouTube viewers. Kleptomania Chauka. That was in the slot. That was the rank bad delivery, the rank half volley that goes crashing into the Kleptomania boundary fence. निखिल कोहली, ये उनका पेट शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट है ये वाला निखिल कोहली का। अच्छी फील्डिंग, ऑन दी वॉली कलेक्ट किया, स्टॉप किया उस गेंद को ऑन दी वॉली। Pritpal Singh Baraj, quite decent, 2.2 overs, 1 for 23, 2.3 overs, तीसरे ओवर की 3 गेंद शेष है। Oh, Tikish inside the edge that goes into the Kleptomania boundary fence. अब गेंदबाज करे तो क्या करे उस तरह के शॉट के लिए? You cannot be setting a field. You just got to take it in your stride. Focus on the next delivery. ये तो होता रहेगा T20 में इस तरह के वाकये। Focus on the next delivery.
20 गेंदों में 57 रनों की दरकार है। 20 गेंदों में। विमेंस क्रिकेट भी बहुत ही जल्द शुरू होगा यहां पर। व्हाट अ टेरिफिक विक्ट्री बाय द इंडियन विमेंस टीम। Thousands of girls will start to take to the game of cricket after that terrific and inspiring World Cup victory by the Indian women's team. Welcome to Chirag Dedia. (1978) से लेकर 2025 के वर्ल्ड कप के पहले 11 बार इंडियन विमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप खेला था। 11 ही बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। 11 के 11 बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा। लेकिन इस बार अमोल मजूमदार के नेतृत्व में, कोचिंग में, हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में कुछ अलग सोचा था इंडियन विमेंस टीम ने। विपरीत परिस्थिति को मात दिया जब वो 3 मैचेस लगातार हारे। 2 और डाई सिचुएशन वाले मैच को जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया को जब शिकस्त दिया तो वो ट्रॉफी हमारी उसी दिन हुई थी। 14 मिनटों में 3 ओवर्स करने हैं। इंस्पायरिंग विक्ट्री देयर फॉर द इंडियन विमेंस टीम। कितना बड़ा करियर है सभी युवतियों के लिए क्रिकेट, द फीमेल क्रिकेटर्स। सबसे हाईएस्ट कैश पर्स इस टूर्नामेंट के दरमियान 40 करोड़ प्लस का कैश प्राइज उस वर्ल्ड कप में दिया गया। इंडिया की विमेन विनिंग टीम के लिए 51 करोड़ का कैश प्राइज दिया गया। इंडियन विमेन्स टीम को 51 करोड़। क्लिप्टोमेनिया चौका, निखिल कोहली। शानदार शॉट, निखिल कोहली ऑन अ रोल। बंदे में दम है, घुटने नहीं टेके राइजिंग टाइटंस ने। अभी भी कोशिश जारी है। अब बिल्कुल अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए यहां पर निखिल कोहली। हैंड आई कोऑर्डिनेशन के इर्द गिर्द उनका गेम सजा हुआ है। ज्यादा तकनीक का दामन नहीं पकड़ते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर ज्यादा रिलाय करते हैं। महाराष्ट्र के 3 प्लेयर्स इंडियन विमेन्स टीम में, राधा यादव फ्रॉम कांदिवली, जेमिमा रॉड्रिक्स फ्रॉम बैंड्रा, स्मृति मंदाना फ्रॉम पुणे। All the 3 cricketers from Maharashtra had a big role to play. The number 1 one-day batter in the world as far as women's cricket is concerned, that's Smriti Mandhana. What a century from the blade of Jemima Rodrigues against Australia. Oh, Nikhil Kohli, 1 more 6. Entertaining stuff here from Nikhil Kohli. He's on a roll. He's enjoying his outing there. Not just enjoying, अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए थोड़ी सी जान डाल दी है यहां पर निखिल कोहली ने। आलम अब यह है कि 14 गेंदों में कितने रन बनाने हैं जॉन्टी? 14 में 38। 14 में 38। अभी वो फासला बरकरार है, लेकिन अगर निखिल कोहली इसी तरह से रनों की रंगोली को सजाते रहे तो फिर करंट फॉर्म देख लीजिए निखिल का स्क्रीन पर। आठ
गेंदों में 23 रन बनाए निखिल ने। एक आशा की महक थोड़ी सी उभर कर आती हुई इस मैदान पर, संघर्षों के मैदान में फाइट बैक करती हुई राइजिंग टाइटंस। जितने रन यहां पर बटोरी की टीम राइजिंग टाइटंस, उतना ही उनके नेट रन रेट के लिए अच्छा होगा और शायद उस लक्ष्य के नजदीक भी जा पहुंचती है। पता नहीं फिर आखिरी ओवर में कुछ ऐसा सीन है, 18-19 रन चाहिए तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। चले, ये वाइड गेंद मददगार साबित होगी। देखिए 148 तो बना लिए है, वो 165-70 तक बड़ी आसानी से चेस हो सकते हैं। Oh, what a straight drive! Scorching straight drive, but enough time for the fielder to get around it, and they take a couple for that. Good running from Nikhil. Is quite a fit man. Good to go. 2 रन्स मिलेंगे। थोड़ी सी जान डाली है यहां पर निखिल कोहली और अर्पण ने। अर्पण अभी भी डटे हुए लगे हुए हैं। आत्मविश्वास के दामन को पकड़ के रखना होगा, मैच को अपने आखिरी लम्हों में ले जाना होगा। यू गॉट टू टेक द मैच डीप। 7 मिनटों में 2 ओवर्स को मुकम्मल करना होगा। इतना ज्यादा भी जोर नहीं लगाएंगे, चाहे फिर वो एक फील्डर अंदर है। जिस तरह से निखिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 या 3 फील्डर्स भी अंदर हो या बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार छक्के लगा रहे हैं। प्रीतपाल सिंह बराज, दो देख का कॉल दिया है। टेंशन इन दी एयर, थोड़ा सा टेंशन अब लहराता हुआ टीम सुपर किंग्स के खेमे में। मैच में अभी भी हावी है, लेकिन वो मैच को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाए हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। एक्साइटिंग टाइम्स, इट्स अ फनी गेम। ग्यारह में 33। Every time Nikhil Kohli is at the batting end, there is a certain buzz in the air. Expectations soaring when Nikhil is on strike. Can he carry on with the momentum? Prithpal, quite an experienced man. He's supposed to keep his cool under pressure. He's done that so many times in his career. Oh, that was a loose delivery. Oh, balla haath mein gooma. That should have gone out of the park over the mid-wicket fence. That was begging to be hit away. Fortunately for Prithpal, only 1 run given away. 9 में 31, मामला पेचीदा होता हुआ। मत्थे पर परेशानी की लकीर टीम राइजिंग टाइटंस के लिए बड़ी चुनौती है। Oh, that's a big helicopter shot from Arpan Tibrewala. Commit the hour, commit the man.
can they take the match into those dying moments? What a fight back. Welcome to Parag. 8 में 25. कहीं पर भी मत जाइएगा, कहीं पर भी मत जाइएगा. अगर वो आखिरी ओवर में वो 17-18 वाला सीन आता है तो दिलचस्प होगा. चले 4 रन्स. ये पूरी तरह से ये क्रिप्टोमेनिया चौका जान डाल देगा इस मैच में. क्या शाम चुनी अर्पण टिबरेवाला ने अपने बल्लेबाजी का हुनर पेश करने के लिए 100% मैच में जान आ चुकी है. जो खेमा बिल्कुल शांत हो चुका था, जिस खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक से जाग उठा है टीम राइजिंग टाइटंस का खेमा. और क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है. 7 में 21. ये वाली गेंद काफी मायने रखते है. ये वाली गेंद, आने वाली एक गेंद, क्या बात है. अर्पण टिबरेवाला भी अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाते हुए. अर्पण, कैन यू प्रोड्यूस सम मोर मैजिक? मिस कर गए. डॉट गेंद, ये रिलीफ है. रात की सांस ली है प्रितपाल ने और सुपर किंग्स ने उस डॉट गेंद के साथ. 7 गेंद में 21 स्ट्रेट है. डॉट गेंद अब 6 में 21. 6 में 21. कौन करेगा ये आखिरी ओवर? किसे वो जिम्मेवारी मिलेगी? टीम के सर्वोत्तम गेंदबाज या तो फिर सबसे अनुभवी गेंदबाज को वो जिम्मेवारी मिलेगी? $163 for 6 आफ्टर 19 ओवर. 7 एक्स्ट्राज अभी तक. दीपेन के 4 ओवर्स में 2 विकेट, 19 रन दिए. साचेत ने 4 में 24, प्रितपाल ने 4 में 42. धैर्य फोफाडिया का 1 ओवर बाकी है. 3 में 31 काफी महंगे साबित हुए हैं. 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. छठा गेंदबाज धैर्य पर विश्वास जताया है. 3 में 21 रन दिए हैं. ये एक एनकरेजिंग साइन हो सकती है टीम राइजिंग टाइटंस के लिए. अभी तक के 3 ओवर्स जो धैर्य ने किए, 31 रन से दिए 18 गेंदों में. 21 रन करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. चमत्कार होते हैं क्रिकेट के मैदान पर. बिल्कुल बुलंद हौसलों के साथ खेलना होगा, जोश और जज्बे के साथ खेलना होगा. अच्छी गेंद अंडर प्रेशर. अब मयूर अमरकांत एंकरिंग करे, चीयरिंग करे, क्या क्या करे. 5 में 21. मामला अब आपातकालीन है. बहुत ही बढ़िया गेंद की वो. चार में 20 अंडर प्रेशर. धैर्य ने अच्छी शुरुआत हासिल की है. धैर्य ने अंडर प्रेशर बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी को शुरू किया. हालांकि अभी भी उनका काम समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी शुरुआत धैर्य फोफाडिया की. अंडर प्रेशर. अर्पण टिबरेवाल, सभी की निगाहें अर्पण पर. गेंद गैप में गई है और क्रिप्टोमेनिया चौका. सटीक तरीके से गैप को पीक किया. तीन 16 दोस्तों, 3 गेंदों में 16 रन. एक चौका भी अगर लगाते इस गेंद पर तो स्टैटिस्टिकली दिलचस्पी बनी रहेगी. अमरदीप सिंह बराज, भाई बंदा स्नूकर स्टिक हाथ में लेगा या क्रिकेट बैट?
दाद देनी होगी धैर्य फोफाड़े को, दाद देनी होगी. अंडर प्रेशर उजागर होकर गेंदबाजी की, अंडर प्रेशर. इस मैच के आखिरी लम्हों को 400 दर्शक लाइव देखते हुए 2 में 15. चलिए अब तो नामुमकिन सा है, लेकिन क्या जान डाली है इस मैच में. स्पिरिटेड फाइट बैक किया है, और क्योंकि इतने नजदीक आए टारगेट के, वो नेट रन रेट नीचे नहीं आएगा, बना रहेगा वो नेट रन रेट. अच्छी कोशिश, घुटने नहीं टेके टीम राइजिंग टाइटंस ने, ये बहुत ही बढ़िया बात है. It's all over. That's going to be the second win in 3 matches for Team Superkings. अभिनंदन के पात्र बन चुकी है टीम सुपर किंग्स. बड़ी अच्छी जीत दर्ज की, बट काफी अच्छा फाइट बैक किया. टेक अबाउट टीम राइजिंग टाइटंस. You have played some good spirited cricket to make a match out of this one. Requesting Amardeep Singh Baraj, Aditya Gupta to please take the stage alongside Vinay Surana and Monisha. best catch? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before. जादू ये फीवर बड़ा GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा GSC T20 का जादू ये फीवर बड़ा घुमा के चले जो बल्ला शोर हुआ और मच गया हल्ला
होगी चौकों छक्कों की बारिश, ना चले गेंदबाजों की साजिश, देख के तेज और स्पिन का जादू, बल्लेबाज हो जाए बेकाबू, क्रिकेट के खेल का यही है जज्बा, हर कोई चाहे गेम पे कब्जा, ले विकेट फूले बॉलर का सीना, एक एक रन पे निकले पसीना, बड़े रोमांच हर गेंद में पल पल, क्रिकेट में रम गया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब। GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा, GSC T20 का जादू ये फीवर बढ़ा, GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा, GSC T20 का जादू ये फीवर बढ़ा, है सर पे चढ़ा, ये फीवर बढ़ा। GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा, GSC T20 का जादू ये फीवर बढ़ा, GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा, GSC T20 का जादू ये फीवर बढ़ा। Here we go, यू घुमा के चले जो बल्ला, शोर हुआ और मच गया हल्ला, होगी चौकों छक्कों की बारिश, ना चले गेंदबाजों की साजिश, देख के तेज और स्पिन। Hard luck, well played. Once any team gets to 180 plus, it's always going to be a daunting task. Once again, a case of 15-18 runs given away extra. But you all did well to restrict the team to around 180. At one point in time, looked like they would get to more than 200 plus. But a very spirited fight back. One win, one loss. You collect some positives tonight. Not a bad scene. Not at all. Still a long way to go. We have 6 other matches, and if we can get another 4 to 5 matches out of that, we should be absolutely into top 4. That's what our target is right now. And no doubt they had a very good start. They opened really well. They had a good partnership. But after that, the way we got into the match, easily they were going about 200. But the bowlers, they really bowled really well. I should say Raghav, PL, and Siddhan and Rajiv. Rajiv was the one who was coming in and getting us wicket. That was really good. But Sanjeet was playing really good. His one decision could have been on either side, and there was a very different result, I should say that. But frankly speaking, we chased it. We didn't utilize the power play well. But after that, we have a long batting lineup till the end. And Kohli lives up to his name. He always gets that spice into the match when he comes into bat. And Shashwat, Raghav, and PL, they all batted really well. Thank you very much. Yes, hard luck, Sunil Raja. Wishing your team the best for the remainder of the tournament. It's time for us to invite the winning captain, Sanjay Srivastav, a happy man. Well done, Sanjit. 2 wins out of 3 matches. The captaincy responsibility not taking a toll of Sanjit Srivastava, the batsman, and that is the greatest news for Team Superkings. The third good knock on the trot, and you are nicely set for the remainder of the tournament. You're leading the team with so much of confidence now. The stage is all set for Superkings. I had told you earlier during the toss that the pitch condition, we don't care about the pitch condition or the dew condition. If we play to our strengths, we are going to win the match, and we have won this match. And that start from Gaurav Devli really gave us the momentum. Then after that, we just have to be in the wicket. The wicket was playing really good. But yeah, I think we were 20-25 runs short, but the bowlers played really good. Thank you. Well done, Sanjit. Maybe a sorry the way of Abhay Maru for that dismissal. Maybe that will come after the match. It's time for us to hand over the best catch award. To do the honors, it's Captain Abhay Vaidya. The best catch goes to Gaurav Devli.
That's a gift hamper on part of our gifting partner #nuts for every man of the match award right to the tournament. We would love to see Gaurav Devli picking up the man of the match award. शायद इस टूर्नामेंट में और 2-3 बार देखने को मिलेगा. Well done. Yes, it's time for the man of the match award to be given away. To do the honors, it's going to be the convener himself. That's Vinay Surana. A gift voucher of rupees 1,000 on behalf of me and Specs for every man of the match award right to the tournament. The man of the match award goes to Sanjay Srivastava. 50 plus and 1 wicket economical spell. So जाने दो. नहीं नॉन स्टॉप 3 मिनट. नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा. नहीं संजीत, रियली बहुत ही अच्छा खेल रहे हो और जिस तरह से आप बल्लेबाजी कर रहे हो देखने लायक. यू लीडिंग द टीम वेल. बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है. यू गॉट टू टर्न राउंड द कॉर्नर. यू आर प्रोड्यूसिंग योर ए गेम. दैट इज द गुड न्यूज. क्या कहेंगे आज के इस मैन ऑफ द मैच के खिताब के बाद? Hello. So, I mean, I had just had to stay in the wicket. The wicket was not that good. The wicket was a little slow. So, I just had to stay in the wicket and I was focusing more on like going 180 plus. And I had run out our main middle order batsman Abhay, so I had to be there by guilt also. Thank you. आपकी बैटिंग तो एंजॉय करती है टीम, लेकिन आपके स्पीचेस ज्यादा एंजॉय कर रही है आपकी टीम. चले, आज की शाम यहीं पर समाप्त होती है. गेम नंबर 10 कम्स टू एन एंड. कल रेस्ट डे नहीं है, मंडे मेंटेनेंस डे होने के बावजूद कल का मैच है. मिलते कल ठीक 6:30 बजे टॉस के साथ. थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, टेक केयर. का जादू बल्लेबाज हो जाए बेकाबू. क्रिकेट के खेल का यही है जज्बा. हर कोई चाहे गेम पे कब्जा. ले विकेट फूले बॉलर का सीना. एक एक रन पे निकले पसीना. बड़े रोमांच हर गेंद में पल पल. क्रिकेट में रम गया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब. GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा. GSC T20 का जादू ये फीवर बढ़ा. GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा. GSC T20 का जादू ये फीवर बढ़ा. है सर पे चढ़ा. ये फीवर बढ़ा. GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा. GSC T20 का जादू